Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50 मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश लिटरेचर के MCQs जो कि हर टेस्ट में रिपीट होती हैं, चाहे वो CSS का हो, PMS का हो, NTS गैट या कोई भी टेस्ट हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs इज़ इन विच सेंचुरी वाज पर्स प्लोमैन रिटन। इसके ऑप्शंस हैं 14th, 12th, 10th, 11th, and the right option is 14th century. Piers Plowman is a humorous style written by William Langland in 14th century. Next MCQs है जेफरी चॉसर सर्व्ड विच किंग। इसके ऑप्शंस हैं रिचर्ड थर्ड, जेम्स फर्स्ट, एडवर्ड थर्ड, हेनरी सेकंड, and the right option is Edward III. Geoffrey Chaucer was a member of Edward III's army in France. Next MCQs है The 18th century work Tom Jones was written by whom? इसके ऑप्शंस हैं सैमुअल जॉनसन, हेनरी फील्डिंग, जॉन डन, टोबियस स्मॉलेट, and the right option is Henry Fielding. In 1905, Virginia Woolf began to write for which publication? और इसके ऑप्शंस हैं द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट, द लेडीज़ होम जर्नल, स्ट्रैंड मैगजीन, रीडर मैगजीन, एंड द राइट ऑप्शन इज़ द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। नेक्स्ट MCQs है जॉयस नॉवल यूलाइसिस टेक प्लेस ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? और इसके ऑप्शंस हैं अ वीक, 24 आवर्स, अ लाइफ टाइम, 6 months, and the right option is 24 hours. Ulysses is set on a single day, June 16, 1905 in Dublin, Ireland. Next MCQs है What was the nationality of Oscar Wilde? और इसके ऑप्शंस हैं आयरिश, स्कॉटिश, फ्रेंच, इंग्लिश, एंड द राइट ऑप्शन इज़ आयरिश। ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो एक आयरिश राइटर थे। नेक्स्ट MCQs है हु रोट द पोएम रेक्वियम? इसके ऑप्शंस हैं एना एक्मेटोवा, विलियम शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन, जॉन मिल्टन, एंड द राइट ऑप्शन इज़ एना एक्मेटोवा। फ्रेंड्स, रेक्वियम जो थी ये एक एलिजी थी जिसे एना एक्मेटोवा ने लिखा था। नेक्स्ट MCQs है द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चॉसर्स ह्यूमर इज़ इट्स। इसके ऑप्शंस हैं अर्बनिटी, क्रूडिटी, ट्रिविलिटी, सेंटिटी, एंड द राइट ऑप्शन इज़ अर्बनिटी। नेक्स्ट MCQs है हु इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश क्रिटिक पोइट? इसके ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नल्ड, सर फिलिप सिडनी, जेफरी चॉसर, एंड द राइट ऑप्शन इज़ मैथ्यू आर्नल्ड। फ्रेंड्स, मैथ्यू आर्नल्ड वाज द फर्स्ट मॉडर्न क्रिटिक एंड कुड बी कॉल्ड क्रिटिक्स क्रिटिक। नेक्स्ट MCQs है हिम टू एडवर्सिटी इज़ अ पोइम बाय। इसके ऑप्शंस हैं थॉमस ग्रे, अलेक्जेंडर पोप, एडवर्ड गिब्बन, विलियम ब्लैक, and the right option is Thomas Gray. Next MCQs है Who wrote the poem The Seven Ages of Man? इसके ऑप्शंस हैं जॉन मिल्टन, जेफरी चॉसर, विलियम शेक्सपियर, एडवर्ड गिब्बन, and the right option is William Shakespeare. This poem is a part of Comedy As You Like It that was written by William Shakespeare. Next MCQs है Who wrote the storyteller? इसके ऑप्शंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, हेक्टर ह्यूग मुनरो, एंड द राइट ऑप्शन इज़ हेक्टर ह्यूग मुनरो जिनका पेन नेम था साकी। इट वाज अ ह्यूमरस शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट MCQs है जेन ऑस्टन रोड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके ऑप्शंस हैं रेस्टोरेशन, विक्टोरियन, मिडिल इंग्लिश, रिजेंसी, and the right option is Regency. Jane Austen lived and wrote during this period. Next MCQs है One of these men did not write during the Restoration period. Who? इसके ऑप्शंस हैं जॉन मिल्टन, थॉमस ऑटवे, सर वाल्टर स्कॉट, जॉन ड्राइडन, and the right option is सर वाल्टर स्कॉट। Next MCQs है The Bronte sisters wrote during this period. इसके ऑप्शंस हैं रिजेंसी, रेस्टोरेशन, रोमांटिक, विक्टोरियन, एंड द राइट ऑप्शन इज़ विक्टोरियन। दीज वर वेरी इंटेलिजेंट वुमेन इन द विक्टोरियन इरा। नेक्स्ट MCQs है
Literary divisions are not always exact, but we draw them because they are often convenient. The majority of English literary periods are named after. इसके ऑप्शंस हैं the leading characteristics of the age, monarchs or political event, the primary author of the age, the language of the age, and the right option is monarch or political events. Next MCQs है which period of literature came first. इसके ऑप्शन है Regency, Victorian, Romantic, Restoration, and the right option is Restoration. Next MCQs है in what language did Shakespeare write. इसके ऑप्शंस हैं Middle English, German, Old English, Early Modern English, and the right option is Early Modern English. Next MCQs है which work was published first. इसके ऑप्शंस हैं Blake's Songs of Innocence, Mary Shelley's Frankenstein, Lord Byron's Don Juan, Sir Walter Scott's Ivanhoe, and the right option is Blake's Songs of Innocence. Next MCQs है which of the following works was written before all important Battle of Hastings. इसके ऑप्शंस हैं Beowulf, Canterbury Tales, The Domesday Book, Sons and Lovers, and the right option is Beowulf. Next MCQs है who wrote first. इसके ऑप्शंस हैं जॉर्ज इलियट, क्रिस्टोफर मार्लो, Howard Earl of Surrey, William Shakespeare, and the right option is Howard Earl of Surrey. Next MCQs है which work was completed last. इसके ऑप्शंस हैं जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, जॉर्ज हर्बर्ट्स द टेम्पल, विलियम शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, Ben Jonson's Welpen, and the right option is John Milton's Paradise Lost. Next MCQs है which of the following poets wrote during the Victorian period but was not published until the 20th century. इसके ऑप्शंस हैं क्रिस्टीना रोसेटी, गेरार्ड मैनले हॉपकिंस, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, टेड ह्यूग्स, and the right option is गेरार्ड मैनले हॉपकिंस. Next MCQs है this work was not originally published in the 20th century. इसके ऑप्शंस हैं हेनरी जेम्स द एम्बेसडर्स, Thomas Hardy's Tess of the D'Urbervilles, E.M. Foster's A Room with a View, Virginia Woolf's Mrs. Dalloway, and the right option is Thomas Hardy's Tess of the D'Urbervilles. Next MCQs है which poet did not write during the 16th century. इसके ऑप्शंस हैं जॉन स्केल्टन, विलियम शेक्सपियर, सर थॉमस वाइट, थॉमस कैरियो, and the right option is Thomas Carreau. Next MCQs है historical events often influence literature. Which of the following didn't occur during the Restoration period? इसके ऑप्शंस हैं चार्ल्स II was restored to the throne, the French Revolution, the Exclusion Bill crisis, the Great Fire of London, and the right option is the French Revolution. Next MCQs है he was not a Renaissance writer. इसके ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, सर थॉमस मैलोरी, एंड द राइट ऑप्शन इज सर थॉमस मैलोरी. नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सब पीरियड्स डज नॉट फॉल अंडर द न्यू क्लासिकल पीरियड. इसके ऑप्शंस हैं द रेस्टोरेशन, जैकोबियन एज, द अगस्टन एज, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, and the right option is Jacobean age. Next MCQs है which of the following periods of English literature came last. इसके options हैं the Elizabethan age, the Commonwealth period, the Jacobean age, the Middle English period, and the right option is the Commonwealth period. Next MCQs है this work was written before the three other choices. इसके options हैं Bede's An Ecclesiastical History of English People, Julian of Norwich's Book of Showings, Chaucer's Canterbury Tales, Sir Thomas More's Utopia, and the right option is Bede's An Ecclesiastical History of English People. Next MCQs है
Which of the following writers would be an appropriate subject for a class on the literature of British Empire? इसके ऑप्शंस हैं रडयार्ड किपलिंग, एडवर्ड फिट्जगराल्ड, शार्लेट ब्रॉन्टी, any of these. And the right option here is any of these. Next MCQs is World War I affected the writing of many authors. Which of the following poets would not have been touched by that event? इसके ऑप्शंस हैं T.S. Eliot, Siegfried Sassoon, Wilfred Owen, Oscar Wilde. And the right option is Oscar Wilde. Next MCQs is the period of maturation, intellectual growth and social graces during the Renaissance is called the. इसके ऑप्शंस हैं aristocracy, new age, reformation, enlightenment. And the right option is enlightenment. Next MCQs is the most popular French playwright Jean-Baptiste Poquelin is known as. इसके ऑप्शंस हैं कैलोन, कॉर्नेल, Quatrain, Molière. And the right option is Molière. Next MCQs है the first English woman to earn her living as a playwright was. इसके ऑप्शंस हैं नेल गुआन, एफ्रा बेन, लेडी टिजल, एनी हैथवे. And the right option is एफ्रा बेन. Next MCQs है the most important element of a tragedy is. इसके ऑप्शंस हैं plot, character, spectacles, diction. And the right option is plot. Plot is the most important element of a tragedy. Next MCQs है but God's eternal laws are kind and break the heart of stone. In which poem do these lines appear? इसके ऑप्शंस हैं We Are Seven by Wordsworth, Ballad of a Reading Goal by Oscar Wilde, Prisoner of Chillon by Byron, none of these. And the right option is Ballad of Reading Goal by Oscar Wilde. Next MCQs है Modern age is an age of. इसके ऑप्शंस हैं pessimism, cynicism, conflicts and controversies, subjectivity, all of the above. And the right option is conflicts and controversies. Next MCQs is who is the author of A Brief History of Time? इसके ऑप्शंस हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टेफन हॉकिंग, जगदीश चंद्र बोस, आइजैक न्यूटन. And the right option is Stephen Hawking. Next MCQs है O Captain My Captain is a poem written by. इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, मार्क ट्वेन, वाल्ट विटमैन. And the right option is वाल्ट विटमैन. Next MCQs है What do you mean by a quatrain? इसके ऑप्शंस हैं a poem of 14 lines, a stanza of 14 lines, a stanza of 6 lines, a stanza of 4 lines. And the right option is a stanza of 4 lines. Quatrain is a stanza of 4 lines. Next MCQs है Find the odd man out. इसके ऑप्शंस हैं Ulysses, The Falcon, The Virginians, On Liberty. And the right option is The Falcon. Next MCQs is Beauty is truth, truth is beauty is stated by. इसके ऑप्शंस हैं जॉन कीट्स, P.B. शैले, जेन ऑस्टन, जॉन ड्राइडन. और इसका राइट ऑप्शन है जॉन कीट्स. नेक्स्ट MCQs है Who is the writer of the poem A Grammarian's Funeral? इसके ऑप्शंस हैं P.B. शैले, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट ब्राउनिंग. And the right option is Robert Browning. Next MCQs है The treatise on liberty was written by. इसके ऑप्शंस हैं रस्किन, लैम, जॉन स्ट्यूअर्ट मिल, ऑस्कर वाइल्ड. And the right option is John Stuart Mill. Next MCQs है Of Human Bondage is written by. इसके ऑप्शंस हैं विलियम समरसेट मॉग, जेम्स जॉयस, W.B. Yeats, फिलिप सिडनी. And the right option is William Somerset Maugham. Next MCQs है Who wrote Shakespeare's later comedies? इसके ऑप्शंस हैं A.C. Bradley, Palmer David John, Dr. Johnson, none of these. And the right option is Palmer David John. Next MCQs is The Rape of the Lock is a. इसके ऑप्शंस हैं
parody, elegy, romance, sonnet, and the right option is parody. Next MCQs है टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग was first published in. इसके ऑप्शंस हैं the first half of 19th century, the first half of 18th century, the second half of 18th century, 19th century, and the right option is the first half of 18th century. Next MCQs है which of the following was a romantic poet. इसके ऑप्शंस हैं टेनिसन, अर्नल्ड, पी शेले, ब्राउनिंग, and the right option is P Shelley. So friends, that's all for today. For more videos, subscribe to our YouTube channel. And thank you so much. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.